नमस्कार, मी डॉक्टर अंजली राजवाडे. नमस्कार मॅडम. हा, मला चेक करायचं होतं की ऑडिबल आहे की नाही आहे, म्हणजे मग एकदा चेक केलेलं बरं असतं कधी पण. हाँ यस मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, गुप्ता मैडम बोल रही हूँ. यू आर ऑडिबल. व्हेरी गुड मॉर्निंग. व्हेरी या सर, या सर, या सर. हमी साऊंड येतोय. थांबला थांबला. एम आय ऑडिबल? हाँ यस मैडम. यस. So, Anjali madam, welcome Rajwade madam and Dr. Atul Jaibhai sir. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. थँक्यू व्हेरी मच. सुप्रभा मॅडम बोलताय ना? हाँ हाँ हाँ, यस 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 मैडम. So अंजलि मैडम, बोथ द गेस्ट. यस मैम. दोनों भी गेस्ट आ चुके हैं. और ओके, shall we start? Munot sir, Yes, madam. what is the position regarding our students? Students are joining, madam. हाँ, Continuously joining, and we have also created a YouTube link, and Yes. program is live streaming. so so the YouTube link is also provided, so the students might have joined there also. So Yeah, it is yes. it is better to start now, no? Yes. Yes, Jai Bhai sir and Rajwade madam, Yes, shall we yes, start ma'am. now? Yes, 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 ma'am. कर सकते हैं? yes. By all means. हाँ. Over to you, Divakar madam. Okay, ma'am. Thank you. If somebody is the real architect of the society, then it is woman. Woman is the most beautiful creation of this planet. So first of all, I wish Happy International Women's Day to all the beautiful ladies. Feminism is not about making women strong. Women are already strong. It is about changing the way the world perceives that strength. So, good morning to each and everyone to assemble here. This is Professor Anjali Divakar before you to present today's morning assembly on the occasion of International Women's Day. Today, Internal Complaint Committee of Amalakshan Law College and Amalakshan Mahavidyalaya have jointly organized a program on the occasion of International Women's Day and also conducting a workshop on women empowerment. So that's why we all have joined the online platform to listen the eminent speakers. So welcome to all of you. This day celebrates the power of women, their rights and role in our lives and society. Women really do build a society. They build not only themselves, but also a whole community. Yet history has failed the woman many a time to represent what a woman can be. So that cannot be just a day to celebrate a woman. I think every day should be a day where we respect the divinity of woman. International Women's Day was observed for the first time 1911. Since then, every year on the 8th March, womanhood is celebrated all around the world to honor all the astounding women in our lives.
This day is particularly observed to acknowledge the achievement of women in various aspects of life. So let's start the program with full enthusiasm. Welcoming people is a part of Indian culture. So we maintain this culture, and let's welcome today's first guest speaker, Dr. Atul Jaibhai, Assistant Professor of National Law College, Hidayatullah, Raipur. On behalf of Amolakshan Law College and Amolakshan Mahavidyalaya, Yavatmal. Heartily welcome to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Now I welcome Dr. Anjali Rajwade ma'am, Professor and HOD, Home Science, Radha Devi Women's College, Akula. Heartily welcome to you, ma'am. Now I welcome today's President, Honorable Dr. Suprabha Yadgilwar ma'am, Principal of Amolakshan Law College. Heartily welcome to you, ma'am. Thank you. Now, I would like to welcome today's President, Honorable Dr. Ram Manohar Mishra, Principal of Amolakshan Mahavidyalaya, Yavatmal. Heartily welcome to you, sir. I also welcome all the faculty members and students participants who have joined this special occasion. Now, I would like to request to Honorable Dr. Ram Manohar Mishra to deliver opening remark. Over to Mishra, sir. गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. अमोलकचंद महाविद्यालय आणि अमोलकचंद विधी महाविद्यालयाच्या वतीने संयुक्तपणे आज जागतिक महिला दिवस साजरा करण्यात येत आहे. या निमित्ताने महिलांना ऑनलाईन मार्गदर्शन करण्यासाठी व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. अमोलकचंद विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर यादगीरवार, दोन्ही महाविद्यालयाच्या तक्रार निवारण समितीचे सदस्य डॉक्टर सुनीता गुप्ता, डॉक्टर माधुरी भादे, डॉक्टर दिवाकर, डॉक्टर अतुल जायभाय, डॉक्टर अंजली राजवाडे, श्रीमती ज्योती कडू आणि कार्यक्रमात सहभागी विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सर्वांना जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा. मित्रांनो, आज सर्वच क्षेत्रात महिला यशस्वीपणे कार्यरत असल्या तरी पाठ्यपुस्तकातील महिलांचे चित्रण एकतर नर्स किंवा शिक्षक म्हणूनच केलेले दिसून येते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये ही दोनच क्षेत्रे महिलांसाठी आहेत असा संभ्रम निर्माण करणारी आहे. महिलांचा विकास झाला तरच समाजाचा विकास सहज शक्य होतो. आजच्या मार्गदर्शनपर सत्रात आपणाला कायदा, बालविकास आणि गृहविज्ञान या विषयावर मार्गदर्शन होणार आहे. आयोजक महाविद्यालयाचे अभिनंदन आणि आपणा सर्वांना जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा. ओव्हर टू अंजली दिवाकर. Thank you, sir, for opening remark and sharing your valuable quotes with us. Now, I request to Professor Chaya Pote, Assistant Professor, Amolakshan Law College, to introduce today's first guest speaker, Dr. Atul Jaibhai, sir. Over to Chaya Pote, ma'am. Thank you, ma'am. So, आजच्या आपल्या या कार्यक्रमाला लाभलेल्या प्रमुख वक्ते डॉक्टर अतुल गजभाई सर, असिस्टंट प्रोफेसर ऑफ हिदायतुल्ला नॅशनल लॉ कॉलेज, युनिव्हर्सिटी, रायपूर, छत्तीसगड. सरांचं शिक्षण सरांनी BA इंग्लिश लिटरेचर मध्ये केलेलं आहे. तसंच सरांनी LLB माणिकचंद्रराव पहाडे लॉ कॉलेज, औरंगाबाद येथून कंप्लीट केलेलं आहे. सरांचं LLM बिझनेस लॉ सिम्बॉसिस लॉ कॉलेज, पुणे इथून झालेलं आहे. तसंच सरांनी डिप्लोमा इन इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी लॉ केलेलं होतं. सरांनी 2012 मध्ये UGC नेट क्लिअर केलेला आहे. तसंच सरांची PhD ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी औरंगाबाद येथून कंप्लीट केलेला आहे. सर मागील 7 वर्षापासून असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून नॅशनल लॉ कॉलेज, युनिव्हर्सिटी, रायपूर येथे कार्यरत आहे. तसेच सरांनी रिसर्च आर्टिकल पब्लिश केलेले आहेत. पेपर प्रेझेंटेशन, सेमिनार्स नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलवर सुद्धा केलेले आहेत. सो असे आपल्याला आज या कार्यक्रमासाठी लाभलेले प्रमुख वक्ते डॉक्टर अतुल गजभाई सर आज आपल्याला
सायबर क्राईम अगेन्स्ट विमेन आणि चॅलेंजेस अँड सेफ्टी मेजर्स या विषयावर संबोधन करणार आहे. डॉक्टर अतुल. Thank you, madam. I make little correction. Dr. Atul Jai Bhai. Is it correct, sir? Yes, it's fine. Yes, yes. So thank you, Chaya madam, for your introduction. So shall I start? Yes, sir. Let me share my screen. PPT, is it visible, ma'am? Yes, ma'am. Yes, sir. It's visible. Okay. So at the outset, I wish you all happy International Women's Day. I express my sincere gratitude towards Dr. Suprabha Yadgirwar, Principal, Amalakchand Vidhi Mahavidyalay, and Dr. Ramanohar Mishra, Principal, Amalakchand Vidhi Mahavidyalay. I'm also thankful to Professor Sandeep Nagraye, Professor Anjali, and the entire organizing committee for inviting me for this lecture. The topic for my today's presentation is cyber crimes against women, challenges and safety measures. So let me start with the presentation. We are living in the age of information technology, which has certain pros and cons, that is advantages as well as disadvantages are there. And cybercrime is one of the major concern in cyberspace, due to which a considerable number of people, they have been cheated or deceived. If you see, when this lockdown was imposed, there were so many crimes which has been reported by the women pertaining to online harassment as well as cyber defamation. So in this presentation, I will be focusing on those crimes which took place during COVID-19 pandemic, as well as we'll also see what safety measures has to be taken for prevention of cyber crimes. Women and children are most vulnerable to cyber attacks. I mean to say that they can be easily attacked by the cyber criminals in the cyberspace. Apart from that, cases of online harassment have seen an increase by 5 times since the outbreak of COVID-19 pandemic. It has been reported by Chairperson Rekha Sharma of National Commission for Women. Because during pandemic, we had to rely on internet for our daily routine activities, and most of us started working from home, and that's why there is a increase in cyber crimes in cyberspace. So before discussing in detail what are the types of cyber crimes or what are cyber crimes against women specifically, let me give a brief introduction to what is a cyber law, because as there are certain non-law students also who are the participants, and there are certain law students of Amalakchand Vidhi Mahavidyalay, as I got to know. So cyber law is a law which relates to computer, internet and cyberspace related issues. Cyberspace is nothing but it is a virtual world. It is also called as information technology law or internet law. And when it comes to India, Parliament of India have enacted the Information Technology Act in the year 2000. Now the object of this Information Technology Act is nothing but to prevent the cyber crimes. And therefore, if you see from section 65 onwards, you will find the provisions pertaining to cyber crimes under this IT Act. There was no need initially to enact the Information Technology Act because there were no computers, there was no internet. But gradually, computers came, internet came, and that's why the cyber criminals, they started misusing this technology. When IPC was drafted in the year 1860, there was no need, and that's why the need was felt to have a comprehensive legislation. Accordingly, we have this Information Technology Act 2000, where we will find the provisions of cyber contraventions as well as cyber crimes.
So women who has joined for today's session, they should be well versed, or they should be well versed about the basic concepts of these cyber crimes, etc. Cyberspace has no any geographic boundaries. It means that it can be accessed by any person by sitting in any corner of the world. And the same is also applicable to the cyber criminal. So cybercrime can be committed by any person. And therefore it becomes a difficult task for law enforcement agencies to catch that cyber criminal, as well as to put that person behind the bar into the jail. Now let's see what is a cybercrime. There is no any particular definition of cybercrime under the IT Act. But cybercrime is a crime where computer is used as a target or tool to commit a crime. I mean to say that with the help of computers, cybercrimes can be committed, or computer itself can be a target of the cybercrime. Where a cyber criminal, he will introduce a virus into your computer system, and he can have the data, and he can have the access to your data or confidential information which is lying on the desktop. So cybercrime is a crime where computer resource is involved, which include computer system as well as computer network. However, there is a difference between cybercrime and conventional crime. When I talk about conventional crime, then examples of conventional crime would be crimes against person, that is offense of murder, as well as rape, etc., offense against property, theft. So all these traditional crimes are mentioned under the Indian Penal Code. But cyber crimes, they are provided under the Information Technology Act 2000. Then there are categories of cyber crimes, as you can see in this slide, which can be categorized into three. That is cyber crime against person, which may include cyber stalking, cyber defamation, online harassment, cyber bullying. And when I talk about cyber crime against property, nowadays there is also threat to violation of intellectual property in cyberspace. That there is a copyright violation, there is a trademark violation in cyberspace, because it is one kind of a intellectual property. Then cyber crime against government is nothing but, example would be terrorism, cyber terrorism, which is punishable under section 66F of the Information Technology Act, where the cyber criminal tries to shake the unity, integrity, and sovereignty of the nation by sending any threatening emails to the government. However, as I said, in this presentation, we'll be focusing on crimes against women. So whenever a cyber criminal, he commits a crime, he uses the psychology, or he study the mindset of the victim. The cyber criminals, they study human behavior, and therefore they easily target following persons who are needy. Now, who are the needy persons? For example, if there are women, they are looking for a job, etc. In that case, those women can be considered as a needy looking for a job. And cyber criminal may take advantage of the same. He may send any fake job offer through email. And if the woman relies on that mail, then she may provide all her details, believing that the mail is a genuine mail, but actually it's a fake mail. So due to this, cyber criminal can have the access to your confidential information, that is your name, date of birth, etc. Or if you have provided other details, including your photos. So these photos also can be misused by cyber criminals for many purposes, which can be unlawful as well. Then cyber criminals, they also target greedy people, those who are in the need of money. And many a times you might have seen the mail in your mailbox which says that you have won
the lottery, cash prize, etc., or you have won the holiday package, etc. So all these mails are sent by the cyber criminal to attract the people, and later on they cheat or deceive men as well as the women. Where certain amount it can be debited from their account. That's why we should not click on any unknown links, or we should verify all the things minutely before relying on any mail or answering to any mail, etc. Cyber criminals also target women who are careless, those women who are not vigilant about their rights. For example, if there is any old-aged senior lady, and if she doesn't know how to withdraw the money from the ATM, then she has to depend on someone. There is a possibility that while withdrawing the money, a person who is helping, he can be a cyber criminal. So he can easily swap the ATM card. He can exchange the ATM card. If it is possible that both of them are having SBI card, so within a fraction of a second, he can exchange the SBI card. And then he withdraws the money, give it to that lady, and then later on, he enters into the ATM machine and he withdraws the money from the ATM card of that lady. So therefore, we have to be very careful while doing any online transactions in cyberspace, as well as operating this ATM machine. Also, cyber criminals, they target the non-tech savvy people, those who are technology unknown, who don't know how to operate the mobiles, how to operate the desktop, as well as this is also one of the example where the women, they have to rely on someone, and the cyber criminal can misuse this opportunity and he can deceive that woman. Now, after discussing the cyber law as well as the categories of cybercrime in brief, now let us start discussing cyber crimes against women. First is cyber stalking. Stalking means to follow a woman, and when such a stalking is done in cyberspace or by using internet, then it is known as cyber stalking. Cyber stalking, it is punishable under section 354D of Indian Penal Code. As you can see in this slide, it says that any man who follows a woman and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly, despite a clear indication of disinterest by such woman. So that woman has shown disinterest to that person, that you don't send any mails, you don't send any messages, etc. repeatedly. But despite that, a person keeps stalking that woman in cyberspace. In that case, that person can be held liable as per section 354D, which has been inserted under the IPC after Delhi gang rape case through Criminal Amendment Act 2013, because these cases were increasing, cases of cyber stalking. That's why there was a need to insert this section. Further, it says that whoever monitors the use by a woman of the internet, email, or any other form of electronic communication commits the offense of stalking. So if any person is unnecessarily forwarding you any messages, maybe through WhatsApp, or stalking you through social media websites, that is Facebook, etc., Instagram, then that person can be held liable. Then comes another type of cybercrime, that is phishing. This offense, cybercrime, it is committed both against men and women. Phishing is nothing but a method of trying to gather personal information using deceptive emails and websites. Now, for example, what a cyber criminal will do, he will create the duplicate banking website, for example, SBI, and he will send you a link through email that we have to verify certain
documents, etc., details, and for that we have to enter the information. So believing on that link, we click on that link, and it takes us to some website which looks like similar to the website of SBI, and then we fill all our details. Now, while filling our details, we share our personal information, that is our name, as well as Aadhaar card details, as well as ATM card details also we can share. There is a possibility. And due to this, we will land up in a problem, because now the cyber criminal, he has the access to all our confidential information. So that is one type of a phishing attack where women can also be targeted by sending mails by the cyber criminals to women directly to gain the access to their personal information. Second is phishing. Now, if the same cybercrime it is committed through phone calls, you might have heard about the story of a Jamtara scam. Jamtara is a small town in the state of Jharkhand, and there is also a Netflix. So I request all the participants, if you have not seen that series over the Netflix, you see that is a Jamtara scam, which talks about the phishing attacks, where you will receive fake calls over your mobile phone, and the person who is speaking to you, he says that he's speaking from the bank, he's a bank employee, and he says that your ATM card is going to be deactivated very soon. And if you want your ATM card not to be deactivated, then you please provide me all the details, that is ATM card details, CVV number, as well as OTP number also. So when this OTP number is shared, then certain amount is debited from the account of the victim. So during COVID-19 pandemic also, both men as well as women, they reported various instances where they have been cheated, deceived through this phishing attacks. Then smishing is also a type of a cybercrime, just like phishing. Smishing uses cell phone text messages to attract the consumers. Whenever you receive a text message on your mobile that you have won a cash prize or you have won holiday package, etc. In that case, that is a fake message. So it is known as smishing. And women as well as men, they can also be a victim of this cybercrime easily. Then comes cyber defamation, which is also one of the crimes against women. The term defamation means to harm the reputation of any person. And when such a reputation is harmed by using internet or by using cyberspace, then it is known as cyber defamation. Making any false statement against any woman, then it also amounts to cyber defamation. So the term cyber defamation basically means publishing of false statement about an individual in cyberspace that can injure or harm the reputation of that individual. During COVID-19 pandemic also, the women reported about these instances which happened with them, where XYZ persons, they used to troll them through social media websites, as well as they used to stalk them, as well as they used to harm the reputation of that woman. Now this cyber defamation, it is defined under section 499 of IPC, and punishment is given under section 500. Initially, cyber defamation, it was punishable under section 66A of the IT Act. If you remember the case of Shreya Singhal, that is a Shreya Singhal versus Union of India, where that girl filed the petition and she challenged the constitutional validity of section 66A, because somewhere it encroaches upon freedom of speech and expression, and therefore now this section 66A, it has been struck down. It has been removed from the Information Technology Act.
but it does not mean that there are no any other provisions which takes care of any offensive messages against women or which takes care of this cyber defamation. Therefore, Section 500 is useful whenever a woman has been defamed in cyberspace by the cyber criminal. Then comes the matrimonial frauds. It's a very dangerous type of cyber crimes. If you search on Google, you will find that many women have been cheated and deceived with respect to matrimonial frauds. Now let us try to understand how it works. The cyber criminal, first of all, they create the fake profile on leading matrimonial websites for cheating. And then that cyber criminal, he tries to create an emotional attachment with the woman. First of all, he goes through the profile, Facebook profile of that woman. As I said, that cyber criminals also study the mindset, as also they do the prior research before committing the crime. Therefore, the most common targets of this crime are widows or divorced or elderly women who are looking for the life partners or women who are financially sound. And then the cyber criminal will send a friend request to this woman. And then he will start chatting with that woman through social media. But he never comes face to face with that woman. And he says that he's settled in abroad and he's a very rich person. So he tries to attract that woman towards himself. And then when it goes on for 2 or 3 months, this story between men and women, then one day he says that now he wants to visit India. And he has brought expensive gifts for her. And she also becomes very happy after listening this. And then he again calls to that lady and says that he has landed to the airport, Delhi airport. However, the custom officers, they have arrested him. Why? Because as he has brought expensive gifts, actually he has not brought any expensive gifts. He is also not there in the Delhi airport. It's just a fake call and the person is also fake. But the lady, as there is an emotional attachment for 2-3 months, so she believes whatever he says. So believing that he has been caught by these custom officers for clearance of costly gifts or as conversion charges for foreign currency, government clearance for diamonds, then he says that these custom officers, they are asking for 50,000, 1 lakh rupees, etc. Then and only custom officer will release that person. So believing this story of that cyber criminal, the lady, without giving a second thought, she immediately transfers the money to his account. And later on, when she tries to connect her, that person does not pick up the phone, or either his phone is switched off. And that person never appears because that person was not any person who settled in abroad. He was only a cyber criminal. So therefore, it is a what I can say, it's a moral of the story is that women, they should be very careful while dealing with NRI profiles on matrimonial websites, and they should commit to marriage only after face-to-face meetings. Because as we saw this matrimonial frauds, that cyber criminal, he never comes online, he never shows his face to that lady. That's why women should be very careful while dealing or uploading images or talking to any NRI profile. All these details, it has to be verified minutely before sharing your details to that person. Then another type of cybercrime is
cloning of Facebook accounts. There might be participants in the today's session, maybe men or women, whose Facebook account might have been cloned maybe once, twice, and these cases also increased during COVID-19 pandemic. Now there's a difference between cloning of Facebook account and hacking of Facebook account. When your account is cloned, it means there is a duplication of your account. So how it works? A cloned account uses the name and picture of real Facebook user. And profile picture, it is easily available. If I type your name on Google, even it will show your image. So I can use that photo for creation of this cloning of Facebook account. And once a fake account is created by a cyber criminal, then he will go through your friend list if the friend list is not hidden, and then he will start sending the friend request to some people. And once he sends this friend request, the other person will also accept, believing that it has come from the genuine source. And then cyber criminal starts asking for money from the friends to whom the friend request has been sent, that he has been admitted in the hospital, he may say that, and he requires some money, etc., or there is some emergency. And some people may believe, and they immediately will transfer the money also. And later on, the original friend who has never sent a friend request, he may say that I have never sent a friend request to you, or I never demanded any money. Therefore, we should be careful if our Facebook account is cloned. So how to prevent it? We can go to account settings and privacy. So first of all, this is very important for women. If they are not locked their profile, they should lock their profile so that cyber criminal cannot see the feeds of your social media websites. He cannot read your stories. He cannot see your images also. He cannot even download your image if your profile is locked. If your profile is not locked, he can download image. He can create this duplicate account also. Another precaution which you have to take is that you should hide your friend list, because I see so many accounts where I can see the entire friend list of that person. Therefore, women, they are advised that you hide your friend list. And there is one setting that who can see your friend list. So make it as only me. So only you can see your friend list and other people cannot see your entire friends. Otherwise, it becomes easier for them. Once the fake account is created, then they know to whom they have to send the friend requests. So this is very important. Then hacking is also a type of cybercrime which is committed against both men and women. Sometimes the desktop of women, it is hacked by introducing or sending any virus or malware into that system. And then cyber criminal can have the access to unwanted pictures, images of that woman. So hacking is nothing but unauthorized access to computer system with the intention of stealing information, causing damage, wrongful loss to individual, entity, as well as to the government. It is punishable under section 66 of Information Technology Act, that is computer related offenses. However, there is a difference between ethical and unethical hacking. Ethical hacking means those persons who are helping the law enforcement agencies to catch the cyber criminal. That's why they are known as the ethical hackers. On the other hand, unethical hacking is done by the cyber criminals. And therefore, as you can see the image in this slide, person wearing the black hat. Therefore, there are also types of hackers, that is white hat and black hat hackers. White hat hackers, those who help the law enforcement agencies for investigation to catch the cyber criminal, etc.
And black hat hackers are those persons who actually commit crime or who hack the social media accounts of women, etc., or who gain the access to confidential information of the women. They are known as the black hat hackers. Then comes another type of crime against women, that is morphing images or videos. And therefore one question arises that whether women they are safe on internet, whether they are safe in cyberspace. Now let us try to understand what is this morphing. Morphing is editing the original picture by an unauthorized user. Now initially this morphing was used in the Bollywood industry to edit certain pictures, videos for animation purpose. But now it has been misused by the cyber fraudster. Now what they do, the cyber criminal, they will download a photo of a woman from social media accounts. You might have seen that or heard about the sari challenge, where a woman, she uploads her image on social media wearing a sari, and then now she asks her friend to accept this challenge and to share her photo as well, and it goes on. So this sari challenge, it can be a fun for women, but it's a golden opportunity for cyber criminal. Why? Because they can use your images for the purpose of this morphing, where your images can be used for any unlawful purposes, or for it can be your photo can be used for any obscene matters, etc. Therefore, women, they should not share their personal information unnecessarily through social media accounts. They should not share their family photos also, because cyber criminals, they do keep watch on all these social media accounts. Now in this crime, cyber criminal, he used the software and applications for morphing, which is a or video doing any editing here and there, then he circulates these images, videos through different sites without their consent. So there is a portion blackmailing, harassment of women. The cyber criminal, then he starts extorting that woman. If you do not fulfill this demand, etc., then he will release all her unwanted pictures, etc. Then comes violation of privacy, which is also one of the cyber crime against women, which is punishable under section 66E of Information Technology Act, which says that whoever intentionally or knowingly captures, publishes, or transmits, means transfers the image of private area of any person without his or her consent, under circumstances violating the privacy of that person, shall be punished with imprisonment, which may extend to 3 years, or with fine not exceeding 2 lakh rupees, or with both. But most of the time, women, they are the victim of this violation of privacy, because many times it happens that in any hotels or in any mall, you may find the hidden cameras, and with the help of those hidden cameras, any unwanted movements of that lady can be captured. In that case, a person who has fixed that hidden cameras, etc., he can be punished under section 66. Therefore, it is advisable before using any restroom, etc., hotels, we should see carefully whether any hidden camera is there or not. Then comes cyber obscenity, is a threat to the internet users all over the world, as there is no territorial limit, which distinguishes the commission of crime between the countries. Basically, there are two provisions of cyber obscenity.
under the IT Act, that is section 67 and 67A. These sections deal with obscenity in electronic spheres and provide punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form. So, for example, if any person has recorded any unwanted videos through that hidden cameras, and later on he uploads or transfers this maybe pornographic content or videos through social media or through WhatsApp, then that person can be punished under section 67 or section 67A of the IT Act. Therefore, it is known as the cyber obscenity. Then comes cyberbullying, which is also known as online harassment. So many reports or cases are filed against cyber criminals during COVID-19 pandemic, and women, they were the victims of this cyberbullying, which is the use of technology to harass, threaten, embarrass, or target another person. Cyberbullying is a growing problem in schools also. Not only the women, but girls, children, they are also becoming victim of this crime. And it has become an issue because the internet is fairly anonymous, which is appealing to bullies because their intimidation is difficult to test. It becomes difficult to catch that cyber criminal. But sometimes cyber criminal think that if there's a URL address, etc., IP address, with the help of that cyber criminal, he can be caught. A record that can prove useful and provide electronic evidence to help stop the abuse. Most of the times it happens that parents, they give the mobile to their children, they don't keep watch what their children they are doing, etc. And therefore a cyber criminal may create emotional attachment with the girl, and then he may ask to share certain photos, and if that girl shares the photos, then starts extortion harassment. So the parents also have to play a major role for prevention of the cyber crimes in cyberspace. Now here are certain cyber attacks in the news, as you can see in this slide. Cyber criminals create vulgar defects cashing in on trending sari challenge. Just now I mentioned about the sari challenge, how it has been misused by the cyber criminal for the purpose of this morphing images, videos. So you can just look at this news. Then there is also a rise in cybercrime during lockdown. Cybercrime touched peak in lockdown months, financial fraud, which compromised 62% of cases in 2020, because most of us, we had to rely on internet services. And among this, women, they were the target of the cyber criminals. Again, as you can see, the photo of the daughter of Chief Minister Arvind Kejriwal, and it's a real story. You can later on Google and find out how she lost 34,000 rupees, because it all started with the QR code. As we know that through this OLX website, we can buy goods products as well as we can sell goods. So daughter of Chief Minister Arvind Kejriwal, she wanted to sell her sofa, and she uploaded the images on OLX, etc. And one day she got a call from a army personnel saying that army personnel, he liked that sofa and he wants to purchase it. Then she also agreed to that. And then cyber criminal, he sent one QR code to her and asked to scan it. She thought that she will receive money in her account, but instead of that, money has been debited from her account. It's not a case of 1,000, 2,000 rupees. She lost 34,000 rupees in this QR code fraud. So women, as well as all of us, we have to keep in mind one thing, that whenever we scan any QR code, at the time of receiving money, we should not enter UPI ID.
it is not necessary because entering UPI ID is only required for sending money to the next person. Then, as you can see the right side, the journalist Nidhi Razdan opens up about fake Harvard University job offer. That is a phishing attack. And this woman also become victim of this phishing attack. So moral of the story is that not only illiterate person become the victim of cybercrime, but educated women can also be a victim of cyber crimes. Why? The moment she opened the mail, she got an offer from Harvard University, but it was a fake mail. It was a phishing attack. And later on, she came in front of the media and she narrated her story that how she has been cheated or deceived. Therefore, the moral of the story is that we should verify the details very minutely. We should not rely on the computer screen, or we should not trust the computer screen easily. So I will conclude now. These are the now what safety measures are there for prevention of cyber crimes, as well as there is a need for cyber hygiene and etiquettes, because during COVID-19 pandemic, we used to wash our hands with Dettol so that we don't get infected with coronavirus. So it is also applicable in cyberspace. We have to follow this cyber hygiene and certain etiquettes, as we are the not citizens, we are the now also netizens in this cyberspace who are browsing daily for this or that purpose. So first is that if you become the victim of any financial fraud, then dial 155260. This number is operative in most of the states, through which you can report the financial fraud. Second, you can also report all cyber crimes on cybercrime.gov.in. This is the portal which has been started by the government of India, and you don't have to go to the police station. Simply, if you become the victim of any fraud, let it be cyber defamation, any cyber crime, you can make a report of the same through this website. Third, you should never hand over your ATM card for swiping to others. Do it yourself, because if you hand over your ATM card to others, then there is a possibility that it can be misused by that person. We should use two-step verification method to sign in emails. Maybe some of you might be well versed about this two-step verification method. If you don't know, you should start using this two-step verification method both for emails as well as for social media accounts. It is also useful for women who are using social media accounts. They can use this two-step verification method, where your email or social media account, it will not be opened, or other person will not be in a position to log in unless and until he has that one PIN number which comes to your registered mobile number. Then we should be very careful at hotels, petrol pumps while making online transactions, because there is a possibility of this ATM card swiping, etc. Then another safety measure is that we should always browse through HTTPS sites, because whenever we do any online transactions through banking websites, we should ensure that that site is HTTPS, because as it stands for secure. And we should also check the symbol of padlock in the address bar. If you click on that padlock, then gives all the details whether that website is secure or not. Then another safety is that note down URL address. If you become the victim of the cybercrime, then you should note down URL address, and you should take the screenshot of any offensive messages or images, because this is the thing which the police officer will ask from you, whether you have any evidence when any person has sent any vulgar message, etc., maybe through WhatsApp, or has sent you any obscene video. In that case, that person can be punished, but the law enforcement agencies, they also require certain digital evidence.
Therefore, you should note down URL address, or you should take the screenshot of any offensive messages or images. Women, they should not trust screen easily. They should verify all the things minutely. Let it be any matrimonial website, etc. Then we should keep changing our passwords frequently, because it's our bad habit that we keep the same password for all the accounts, social media accounts, bank accounts, etc. Therefore, we should not set password as our name, date of birth, mobile number, vehicle number, because it can be easily, this password can be easily compromised by the cyber criminal. And once he compromise your password, then he can have the access to all your data. We should not use the public Wi-Fi. Women should not use public Wi-Fi, maybe at railway station, etc. Because it is rightly said that no lunch is free. If you use the Wi-Fi, then there is a possibility that whatever you are searching on net, it is going to some other server, or whatever data is there on your desktop, it can get transferred to that server, including your images, videos, which can be misused by anyone. Women, they should not share mobile number, emails unnecessarily at shops, hotels. Many times, whenever we do offline shopping, they ask for the numbers, and then once we share our number, they will start sending messages, etc. Then there is a possibility that we can land up in a problem also. And last, we should inform the bank within 24 hours if card is not used by you, that is ATM card. And also RBI also gives the guidelines about this on daily basis for prevention of the cyber crimes. So that's all from my side, as there are two more speakers. So be alert, be safe, and thank you very much for giving me an opportunity. If you have any questions, I'm happy to answer. Thank you very much. Thank you, sir, for speaking about cybercrime against women, and like types of crimes, phishing, bullying, stalking. So, and how to take precautions and safety measures, and how to aware about all fake messages, holiday package, etc. Thank you, sir. Thank you very much. And the most of important, the moral of the story, we should be careful. Definitely we will be. We are grateful for the time and efforts you took to share your knowledge, thought, and experience. Knowledge and experience with us. It's highly appreciable to make this program successful. Thank you, sir, from the bottom of my heart. Thank you very much. Now, I request to Dr. Sunita Gupta, Associate Professor, Amolakshan Mahavidyalaya, Yavatmal, Chairperson of ICC, to introduce today's next speaker, Dr. Anjali Rajwade, ma'am. Over to Sunita, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Just a minute. Sunita, be short, be short. We are running out of time, so be short, please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll be short. Don't worry. Don't worry. Thank you, Anjali, ma'am. Thank you once again. It gives me an immense pleasure to introduce our today's next guest speaker, Dr. Anjali Rajwade, madam. Ma'am is professor and head Department of Home Science, Radha Devi Goenka College, Akola. Madam is nutrition consultant specialized in diabetes and NCDs. Madam has 23 peer-reviewed papers in various national and international journals, while 57 research papers in conference proceedings. Ma'am has authored 2 chapters in books with ISBN number. Ma'am is the co-organizer of MODEM, which stands for Management of Diabetes by Educating Masses. She is also the organizing committee member of National Mega Health Mela. She has an honor of 117 invited guest lectures. She has also authored nutritional article series in Lokmat newspaper. She is the coordinator of skill development course entitled Healthcare and Nutrition under NSQF, which stands for National Skill Quality Framework of UGC New Delhi, and many more. It's a pleasure to have you here, ma'am.
as role model for today's girl student as well as lady teachers and women staff on the eve of Women's Day. Once again, I welcome you. Welcome, ma'am, and I request you for your guest lecture. Over to you, ma'am. Thank you, Sunita ma'am. At the outset, I would like to thank Vidya Prasarak Mandal's Amolakchan College and Amolakchan Law College, Yavatmal. I extend my thanks to Dr. Ram Manohar Mishra sir, Dr. Suprabha Yadgirwar ma'am. They are principals of both the colleges. Then I would like to thank Dr. Sunita Gupta and Dr. Anjali Divakar, chairperson ICC. And at the same time, I would like to thank our previous speaker, Dr. Jaibhai sir also. He actually narrated very informative information for cybercrime. विद्येची देवता मा सरस्वती आणि आहारशास्त्राची देवता मा अन्नपूर्णा यांच्या पुढे सर्वप्रथम मी नतमस्तक होते. आज जागतिक महिला दिन आहे. त्या प्रित्यर्थ आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपली भूमिका योग्य पद्धतीने साकारणाऱ्या माझ्या सर्व मैत्रिणी आणि माझ्या विद्यार्थिनींना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. Please give me some fraction of seconds for sharing my screen. Is my screen visible? Yes, ma'am. Today's topic is nourishing health nutritionally. आहारातून आरोग्याकडे. And I am specifically focusing for adolescents. Adolescent, it may be a girl adolescent student or it may be a boy adolescent student. All of us have to have good nutrition. Actually, adolescence is a girl or a boy who is ranging from the age of 12 to 18 years of his or her age. Importance of nutrition in adolescence is actually adolescence हा जो आहे पिरियड हा ऍडल्टहुडचा बेस आहे. त्याचप्रमाणे आपण न्यूट्रिशनच्या दृष्टिकोनातनं म्हणतोय, म्हणजे इथे जर शरीर यष्टी आपल्याला चांगली कमवलं, आपण आपलं आयुष्य आपलं हेल्थ चांगली कमवली, तर ऍडल्टहुड मध्ये आपण हेल्दी असणार आहे. Physical and intellectual performance also, because diet is related with the physical and intellectual performance of that particular individual. Immature adulthood असतं at the age of adolescence. Adolescent is always confused and he has a peer pressure and inability to take decisions. त्याला काय असतं माहितीये का, adolescence मध्ये आपण मोठं आहे की छोटं आहे हेच त्याला कळत नाही. अशा त्या उंबरठ्यावर तो उभा असतो. पेरेंटल गायडन्सची गरज असते, पण त्याचा इगो हर्ट होत असतो आणि पेरेंटल गायडन्स कधी कधी न्यूट्रिशनच्या बाबतीत आई वडिलांचं अजिबात ऐकत नाही. बिकॉज एव्हरी गुड मदर सजेस्ट टू हॅव गुड फूड टू हिज और हर चाइल्ड, बट द चाइल्ड रिफ्युजेस ड्यू टू सर्टन peer pressures or confusions or inability to take decisions, and moreover his or her egos. Actually, this is the status of India. In India, obese are 25. Obese म्हणजे स्थूल adolescent 25% आहे आणि आपल्या वजनाच्या कमी 64% आहे. And only 11% are normal as far as physical status is concerned. We must, this is an alarming signal for all of us. Only 11% of our adolescents are falling in normal category. That is a dangerous signal. So we should be very alert at this point. What is today's scenario? See, इथे मी भारत देश दाखवलाय. त्या भारत देशाच्या अवतीभोवती
नोटोरियस देश आहेत आपल्या भारताच्या अवतीभोवती. पाकिस्तान आहे, चायना आहे, बांगलादेश है, श्रीलंका है. दे आर डूइंग नोटोरियस थिंग्स फॉर इंडिया. सो हमने इंडिया ने ऐसा तो नहीं हम बोल सकते हैं कि इनको हमारे से दूर कर दो. मानवी शरीर के अवतीभोवती भी अगर आप देखते हो आसपास, तो पोल्यूशन है, सेडेंटरी लाइफ है, स्ट्रेस है, ओवर ईटिंग है, ये सारी चीजें है. तो जैसा हमारा भारत देश ये नहीं बोल सकता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें चाइना बहुत तंग करता है, हमें पाकिस्तान बहुत तंग करता है, इनको हमारे से दूर भेज दो. उसी तरह से हम लोग ट्राई कर रहे हैं पोल्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे आसपास पोल्यूशन आए ही नहीं तो हम हेल्दी रहेंगे. वो आने ही वाला है, ये बात आप सबसे पहले ध्यान में रखो. सेडेंटरी लाइफस्टाईल यानी कि बैठ्या स्वरूपाचं आयुष्य. Everybody is using machines for doing works. In the initial days, सकाळी उठल्याबरोबर मॉर्निंग कोर के लिए भी लोग फरलांगवर चल के जाते थे. Nowadays, attached toilet bathrooms is the facility for all of us. So, हमारी जो लाइफस्टाइल है, it is very sedentary. At the end of the day, we all are tired, but we are tired mentally, not physically. That means our lifestyle is becoming very sedentary. We have to change it. India has some problems, so India is strengthening India's health or India's structure by army, navy, political actions, patriotism, all these things. Then why not a human also can strengthen his or her body through diet, exercise and determination. Like India is doing everything for strengthening India, we also should do something for strengthening ourselves, and that is through diet, exercise and determination. Everyone must consume balanced diet. समतोल आहार. समतोल आहार म्हणजे आमच्या शरीराला जेवढे पोषक तत्व ज्या प्रमाणात लागतात, आमच्या शरीराला लागतात कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट, विटॅमिन, मिनरल्स अँड वॉटर्स. दीज आर द ओनली 6 न्यूट्रियंट्स वी नीड. ते योग्य प्रमाणामध्ये, म्हणजे समजा आपण तुम्ही ऍडोलेसंट मुलगी आहात, तर तुमची रिक्वायरमेंट 2200 कॅलरीजची आहे. तुम्ही ऍडोलेसंट मुलगा आहात, तुमची रिक्वायरमेंट 2600 कॅलरीजची आहे. कॅलरीज इज द युनिट टू मेजर एनर्जी. जसं आपण दूध लिटर मध्ये मोजतो, बटाटा किलो मध्ये मोजतो, कपडा मीटर मध्ये मोजतो, तसंच अन्नापासून मिळणारी ऊर्जा ही कॅलरीज मध्ये मोजल्या जाते. आपल्याला हे सगळे घटक पाहिजे आहे आणि हे योग्य प्रमाणात पाहिजे. आणि आपले जी कॅलरिक रिक्वायरमेंट आहे, इट व्हेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. प्रत्येक व्यक्तीचा टेलर मेड कॅलरिक डाएट प्लॅन असतो. जसं टेलर मेड का म्हणतेय मी, जसं आपण कपडे शिवतो तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीचे टेलर मेड कपडे असतात, तसं टेलर मेड डाएट प्लॅन असतो. पण आपण एक रफली म्हणतोय की ऍडोलेसंट आहे, मध्यम स्वरूपाचं काम करते, तर 2200 ते 2400 कॅलरीज ची तिची गरज असते. समजा असा विचार करा की आपण कामाच्या स्वरूपामध्ये खूप कॅलरीज कंझ्युम करतोय आणि त्या मानाने आपण जेवणातून तेवढ्या घेत नाहीये, आहारातून तेवढ्या घेत नाहीये, तर काय होईल, अशी व्यक्ती रोड होत जाईल. समजा उलट झालं की आपण खूप कॅलरीज खातोय, डेन्स फूड खातोय, कॅलरी डेन्स फूड खातोय, आजकाल जी मिळतात केक, पिझ्झा अँड पेस्ट्रीज अँड ऑल दिस थिंग्स, आपण हे खातोय, त्या मानाने काम करत नाही. काम, आय मीन टू से, either it may be a household work or an exercise work. एक्सरसाइज काही जण करतात आणि मग ते व्यवस्थित खातात, तर ते दिसतात नॉर्मल. तर आपल्याला त्या स्वरूपामध्ये सगळ्यांना यायचं आहे. जो आता आपण पाहिला होता याच्या आधी, फक्त 11% लोक नॉर्मल कॅटेगरीमध्ये आहे, ऍडोलेसंट मुलं, त्या मुलं मुली. तर आपल्याला सगळ्यांनाच नॉर्मल कॅटेगरीमध्ये यायचं असेल तर आपलं काम म्हणजे कामाच्या स्वरूपात असेल किंवा व्यायामाच्या स्वरूपात जेवढं करतो आपण तेवढंच तोंडानी खायची सवय करून घ्यावी लागेल. आपलं एनर्जी इनपुट आणि आउटपुट जर ते इक्वल असेल तर आपण नॉर्मल राहणार,
एनर्जी इनपुट जर कमी असेल आणि एनर्जी आउटपुट म्हणजे कामाच्या स्वरूपामध्ये किंवा व्यायामाच्या स्वरूपामध्ये जास्त असेल तर आपण बारीक होणार. एनर्जी इनपुट जास्त आहे पण एनर्जी आउटपुट कमी आहे म्हणजे कामच काही करत नाहीये किंवा व्यायाम करत नाहीये तर आपण स्थूल होणार, आपण लठ्ठ होणार. आपला बॅलन्स डाएट साधारण कसा असला पाहिजे. आपल्या आहारामध्ये सकाळपासून रात्रीपर्यंतच्या आहारामध्ये 40% शुड बी फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स. 40% फळं आणि भाज्या. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण सकाळच्या जेवणामध्ये भाजी किती घेतो, त्यानंतर वरण, त्यामध्ये असलेली भाजी, काही पालक असेल, मेथी असेल, जे काही असेल, आता हे सगळं त्या भाजीमध्ये येतं. कोशिंबीर, हे सगळं भाजी. आणि दिवसभरात फळं किती खातो हे महत्वाचं आहे. आपल्यापैकी किती जण रोज किमान एक फळ खातात ते स्वतःला आज स्वतःच्या पाठीवर थोपटून घ्या. आणि जे खात नसतील त्यांनी इथून पुढे खायला सुरुवात करा. कारण त्याशिवाय कितीही बाजारच्या मेकअपच्या सामानांनी तुम्ही स्वतःला सुंदर दिसायचा प्रयत्न कराल, इट इज द ब्युटी नेव्हर लाईज इन कमर्शियल प्रिपरेशन, इट लाईज इन फील्ड्स अँड फार्म्स. म्हणजे आपलं सौंदर्य हे कधीही बाजारातल्या सौंदर्य क्रीम्सवर अवलंबून नाही. ते कुठे असतं? शेतांमध्ये आणि मळ्यांमध्ये. म्हणजे जिथे भाजीपाला आणि धान्य पिकवल्या जातं तिथे खरं आपलं सौंदर्य दडलेलं आहे, त्यात आहे. म्हणून आपण ते खाल्लं पाहिजे. प्रोटीन्स म्हणजे उदाहरणार्थ जे नॉनव्हेज खात नाही किंवा अंड खात नाही त्यांना देखील प्रोटीन्स मिळतात. त्यांनी जर का डाळी आणि याचं चांगलं सेवन केलं तर, शेंगदाणे असतील, डाळी असतील, कडधान्य असेल, याचं जर चांगलं सेवन केलं तर त्यांना सुद्धा 25% आहार आपला हा प्रोटीन्सने भरलेला पाहिजे. आपली दैनंदिन गरज प्रोटीन्सची, मुलांनो, तुमच्या 1 किलो वजनाला 1 ग्रॅम, ही मी दैनंदिन म्हणते आहे, महिन्याची नव्हे. म्हणजे तुमचं वजन जर 55 किलो असेल तर रोज तुम्हाला 55 ग्रॅम्स प्रोटीन खावे लागतील. 1 वाटी वरण ज्या वेळेला तुम्ही खाता त्यावेळेला त्यातून फार फार तर 4.5 ते 5 ग्रॅम प्रोटीन्स तुम्हाला मिळतात. म्हणजे आपल्याला असं काहीतरी दिवसभर खावं लागेल ज्यातून आपल्याला 55 ग्रॅम्स प्रोटीन्स मिळतील. तर आणि तरच तुमची वाढ आणि विकास दोन्हीही व्यवस्थित होईल. तेला तुपाचा समावेश जो आजच्या काळात अतिशय जास्त झालेला आहे तो केवळ 10% असला पाहिजे. यामध्ये विजिबल आणि इनविजिबल दोन्ही फॅट्स आले. म्हणजे तेल आणि तूप. आणि त्याच प्रकारे आपण दूध घेतो, दुधामध्येही फॅट असतं. बटर खातो, त्यामध्येही फॅट असतं. किंवा आपण शेंगदाणे म्हणा, तीळ म्हणा, हे जेव्हा खातो त्यामध्येही फॅट असतं. हे सगळं मिळून फक्त 10% आपल्या शरीरामध्ये गेलं पाहिजे. पण या चारही गोष्टी गेल्या पाहिजे. हल्ली झिरो फिगरच्या नादामध्ये मेनी ऑफ द स्टुडंट्स दे स्टॉप कंज्यूमिंग फैट्स. असं चुकूनही करू नका. क्योंकि आप अगर फैट नहीं खाओगे, जो मैंने 10% बोला है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E, K, these are fat soluble vitamins. They will not be utilized by your body and so you will be deprived of fat soluble vitamins. तो उनके फंक्शंस कम होते जाएंगे. वैसे ही ये सारी चीजें हमें हमारे आहार में रखना बहुत जरूरी है. अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी ग्रोथ प्रॉपर होगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी पावर, प्रतिकारक शक्ति, जो रोगों के साथ झगड़ने की शक्ति है वो अच्छी रहेगी और आपको कोई बीमारी नहीं होगी. एंड मेन थिंग, योर स्किन विल बी वेरी सॉफ्ट and very glowing. I am not talking about skin color. Whatever skin color you have, that skin should be glowing and healthy. Your hair, it may be long or it may be short, but they should have some glow. So तुमचे केस चमकदार दिसतील, तुमचा फिटनेस वाढेल आणि you can concentrate better for doing your studies and securing good marks. This is all done by good food and balanced diet.
नाउ अगर आपके पास न्यूट्रिएंट इनएडिक्वेसीज है, मतलब क्या है? देखिए, आपको अगर आयरन की कमी है तो यू विल सफर फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. इफ यू हैव कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी, देन योर बोन्स विल बी वीक. अगर इसी एज में वीक बोन्स रहे तो आगे जाके बहुत ज्यादा तकलीफ होगी. एंड द गर्ल स्टूडेंट्स, दे विल बी फेसिंग, बिकॉज दे आर फ्यूचर मदर्स, तो उनके शरीर से एक 9 महीने 9 दिन रहने वाला बच्चा बाहर आने वाला है विथ ऑल बोन्स एंड थोड़े से दांत भी बच्चे के, माँ के जब वो गर्भाशय में रहता है तभी बन जाते हैं, तो उनके बोन्स भी वीक हो सकते हैं अगर कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी रही तो. अगर प्रोटीन्स की डेफिनेशन है तो योर वीकनेस विल बी इंक्रीज, आपको थकान महसूस होगी, और साथ ही साथ आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी, जो आज के कोरोना के काल में हमने सबने बहुत अच्छे से समझ ली, तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी. आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर कम हो जाते हैं तो आपकी इनएडिक्वेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ का मतलब होता है जो हमें दिखती है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, और डेवलपमेंट का मतलब होता है जो हमें दिखती नहीं है, इट इज नॉट सीन बाय अस बट इट कैन बी फेल्ट बाय अस. जैसे कि हमारी लैंग्वेज की ग्रोथ होती है, हमारे मोटर सेंसेस की ग्रोथ होती है, दैट इज ऑल डेवलपमेंट. सो अगर ये सब नहीं है तो हमें ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने, और इसके कारण क्या है ये कारण भी जानना बहुत जरूरी है. डेफिशिएंसी अगर आयरन की है तो डाइटरी डेफिशिएंसी है, या हमारे शरीर में हुकवर्म है, या फिर एक्सेस मेंस्ट्रुएशन है. अब ये आप समझ लो, कोई लोग अपने आहार में ज्यादा आयरन खाते ही नहीं है. कोई लोग समझते हैं कि हमने आयरन तो खा लिया. फॉर एग्जाम्पल, पोहे आर रिच इन आयरन. पोहा जो रहता है हमारा फ्लैटन राइस, इट इज रिच इन आयरन. तो हमने पोहा खा लिया, वी आर हैप्पी दैट आई हैव कंज्यूम्ड आयरन. लेकिन इन जनरल हमारी स्टाइल होती है, पोहे खाने के बाद चाय पी जाती है. दैट चाय इज अ कल्प्रिट, क्योंकि जितना भी आयरन हमने खाया है पोहे के माध्यम से, वो चाय उसको हमारे शरीर में एब्सॉर्ब होने नहीं देता, यूटिलाइज होने नहीं देता. अगर हम पोहे के साथ साथ नींबू का शरबत पी जाए तो हमारे शरीर में आयरन एब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा. यानी हमने आयरन रिच डिश खाई और हमको आयरन मिला भी. दूसरा उदाहरण मैं बताऊंगी आपको कि बहुत बार मम्मी डैडी को या सबको अभी पता है कि हमने अच्छे मात्रा में चिक्कू खाना चाहिए, हमने अच्छे मात्रा में अंजीर खाना चाहिए, हमने अच्छी मात्रा में डेट्स यानी कि जिसको हम बोलते हैं खजूर, पेंड खजूर खाना चाहिए. तो हर माँ अपने बच्चे को और अच्छा करने के लिए, रिच पीपल आर सोकिंग इट इन मिल्क एंड देन कंज्यूमिंग इट, बट अनफॉर्चुनेटली मिल्क इनहिबिट्स आयरन एब्सॉर्प्शन. अगर हमने आयरन फूड खाने के बाद उसके साथ मिल्क या चाय पी लिया तो आयरन का एब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा. सो कंजम्पशन ऑफ आयरन एंड कंजम्पशन ऑफ करेक्ट फूड्स इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. इंडिया में हर किसी को, नो वन इज विदाउट हुकवर्म इन्फेक्शन, क्योंकि इंडिया में जो एक तरह का कल्चर है बोलो, या फिर जिस तरह की पॉपुलेशन है और बाजार में जिस तरह से सामान लाया जाता है, बेचा जाता है, केयर ली जाती है, तो एवरीबडी इज फेसिंग विद दिस इन्फेक्शन. और इसके लिए हमें सिंपल सी ट्रिक है कि हमें हर साल एक सैटरडे संडे पकड़ के, हमको सैटरडे के रात को, मेरी कोई दवाई की दुकान नहीं है, मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, दिस इज अ गुड मेडिसिन. तो ये जिसको हम बोलते हैं ना, लिक्विड अल्बेमिन नाम की एक दवाई आती है, या एनी मेडिसिन अल्बेंडाजोल ग्रुप की आप ले सकते हो. देन आफ्टर 21 days कंज्यूम द सेम लिक्विड अगेन ऑन थर्ड सैटरडे एंड देन फॉरगेट फॉर अ ईयर. If you are consuming outside food very oftenly, then what you have to do, you have to consume these 2 doses after 6 months, or you can say that twice in a year. और हम worms को हमारे शरीर से निकाल सकते हैं. Second thing is, अगर हमारे नाखून बड़े हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड,
जो दोनों हाथों के नाखून बढ़ चुके हैं, तो नाखून बढ़े हुए उसके ऊपर नेल पेंट लगाना बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए उतना ही खराब है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से अगर नाखून बढ़े हुए हैं तो उसमें से ही हमारे ही शरीर के वर्म्स हमारे ही वापस डाइट में चले जाते हैं और हमारे शरीर में चले जाते हैं। अगर कोई लेडी ने लेफ्ट हैंड के नाखून बढ़ाए एंड इफ शी इज कुकिंग फूड, तो उसके हाथ द्वारा फैमिली के हर मेंबर को वापस से हुकवर्म का इन्फेक्शन हो सकता है। सो वन शुड टेक केयर ऑफ दैट। एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन है, मतलब ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है अगर मेंसेस में, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। ब्लीडिंग ज्यादा होना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप अपने मम्मी से बात करते हो, मम्मी फिर पड़ोसन जो आपकी रहती है उनसे बात करती है, वो बोलती है बहुत अच्छा हो गया, शरीर की गंदगी बाहर जा रही है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मेंसेस के द्वारा जाने वाला ब्लड इज नॉट डर्टी। तो अगर किसी को मेंसेस ज्यादा हो रहा है तो उन्होंने सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलके उसको लिमिट में लेके आना है, नहीं तो फिर आपको आयरन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, क्योंकि मेंसेस में ब्लीड ज्यादा हुआ तो। अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो उसका कारण है डाइटरी डेफिशिएंसी, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। डाइटरी डेफिशिएंसी और एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते, चाहे आप दुबले हो चाहे आप मोटे हो, आपको एक्सरसाइज करना ही है। दुबले व्यक्ति को एक्सरसाइज करके हाई कैलोरी फूड खाना है और मोटे व्यक्ति को एक्सरसाइज करके लो कैलोरी फूड खाना है। तो एक्सरसाइज नहीं करोगे तो अवेलेबल कैल्शियम विल नॉट बी डिपॉजिटेड इन योर बोन्स, इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया है, हमारे यहाँ पे डाइटरी डेफिशिएंसी बहुत है। हम लोग बहुत कम मात्रा में प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं। आवर कल्चर डू नॉट अलाउ अस टू हैव नॉन वेजिटेरियन फूड्स, बट लेट मी बी क्लियर, वेरी क्लियर, non-vegetarian foods have high amount of and that too a good protein in them. अगर हम वेजिटेरियन है तो हमको कम से कम डाइट के बारे में डेली हमारे खाने में वरण भात भाजी कोशिंबीर कढी चटणी हे सगळं आणि एखादी उसळ, उसळ आय मीन नॉट साबुदाण्याची खिचडी, व्हॉट आय मीन टू से उसळ मीन्स आई मीन टू से अबाउट ये जो पल्सेस एंड लेग्युम्स है इनकी उसळ, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो चवळी मटकी, ह्या सगळ्या उसळींबद्दल मी बोलतेय। मायक्रोन्यूट्रियंट डायटरी डेफिशियन्सीज असतात जेव्हा फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल्स आम्ही कमी खातो। खूपशा विद्यार्थ्यांना ह्या सवयी आहेत की त्यांना आवडते तीच एखादी दुकट भाजी ते खातात। I think ma'am has left by mistaken. Yeah, I think so. What to Might do? be internet problem. Yeah. Might she's having. So. We will wait for 1 or 2 minutes. Okay, ma'am. Okay, I think it will be better. Sunita madam, are you here? Gupta madam.
Okay. So it is better to continue our next week. Okay. If Madam will join, then if she is having any information to share, so we will allow her. Okay, ma'am. She has joined now. Yeah, she has joined. तो शायद नेट का प्रॉब्लम है उनकी तरफ. तो चलो शुरू ले I लेंगे. think wait for 5 minutes. She has joined. अंजलि मैडम. Yes, ma'am. राजवाड़े मैडम. Okay, sorry. So again she has left. Yeah. Yes, so we will. Let's continue. Yes. Okay. Now moving forward. Now I request to Dr. Suprabha Yadgilwar ma'am, Principal of Amalakshan Law College, to give presidential remark. Thank you. Thank you, madam. Honorable Principal of Amolakchand College, Dr. Mishra sir. Today's guest speakers, honorable guest speakers, Dr. Atul Jai Bhai sir from Hidayatullah National Law University, Raipur, Dr. Anjali Rajwade madam, Professor HOD, Home Science Department of RDG Women's College, Akola, and we had also invited to third speaker, that is Honorable Srimati Jyoti Kadu madam, District Women and Child Development Officer, Yavatmal, but she couldn't join because she is going to be felicitated from Maharashtra government for her outstanding work in the Amravati division. So she couldn't join us, but she has given the best wishes to our program. So and chairpersons of internal complaint committee of both the colleges, all the respected faculty, staff, and my dear students. Today, Amolakchand Law College and Amolakchand College both have jointly organized this International Women's Day, and on this occasion, we have organized the webinar on the topic of women's empowerment. As it has been already discussed and Anjali Divakar madam has shared that International Women's Day has been celebrated all over the world, and the United Nations has declared the 8th March as to celebrate the International Women's Day from 1975. So to this year's motto of United Nations for celebrating the International Women's Day is very specific one. So I would like to share that motto. That is, a motto of United Nations is the gender equality today for sustainable tomorrow. What it is? Gender equality today for sustainable tomorrow. Very meaningful motto is that. So we all aware that men and women are two halves of the society, two portions of the society. So if society wants to prosper, to progress, then we cannot think of the progress of only one half a portion of the society. So in true manner, any society has to progress. There must be the progress and development of both portions, both halves of the society. It means men and women. So Dr. Babasaheb Ambedkar also stated one time that progress of community can be measured by the degree of progress achieved by its women. So in this manner, gender equality is a sine qua non of sustainable development and sustainable
tomorrow. And as a law students, it can be observed that gender equality is a core concept of our Indian constitution, and accordingly the several steps have been taken at legislative, executive and policy matters, and several issues which are against the women empowerment, they have been addressed, many issues have been redressed, and some new also sprang up or arose it one. But the efforts are going on to establish the gender equality and to eradicate the gender inequality. In this onward march, several steps have been taken, and we are also taking the steps also. But today, with this connection, we have organized a brainstorming on two important aspects of human life. Specifically, the topics are related with the women. One is the cyber crime against the women, challenges and safety measures, and second is the nourishing health nutritionally. Our guest speakers, both of them, Dr. Jai Bhai sir, Dr. Rajvani madam, both have given a tremendous important information regarding the two topics. The first is regarding the cyber crimes and second is regarding the health. Health is a very important aspect of everybody's life. Without a good health, one cannot have a successful life, and even we cannot achieve the success also, and therefore it is called that health is wealth. In Marathi आपण असं म्हणू शकतो की आरोग्यम धनसंपदा. So Rajwade madam has given a detailed information regarding the healthy diet and healthy nutrition. I got one point that the two aspects, that is the health and cybercrime, that we today we are unknowingly using the internet, and also we are unknowingly consuming the diet. After going through with these two lectures, I got this idea that how we are ignorant about using the internet also and consuming the diet also. So today's information is very, very helpful for all of us, not only to the girl students, but also for the boys also, how to build the health also, and how to take precaution while entering into the cyber world. So today the younger generation, and or we can say that the each and every person, it has been necessity to have the knowledge about the internet and the cyber world or internet gadgets. So it has become the part and parcel of our life, but one must be very cautious that we should not use these internet gadgets without having proper precautions and without having the basic knowledge, and that knowledge has been provided by Dr. Atul Jai Bhai sir. So I am very much thankful to both the guest speakers, Dr. Atul Jai Bhai sir and also Dr. Rajwade madam, for giving such a studious information to all of us. Thanks once again, and thank you for giving such a marvelous information. And with these words, I would like to hand over the ring to the Anjali Divakar madam. Thank you once again. Thank you, ma'am, for sharing your valuable knowledge and tell us about today's motto of International Women's Day, that is gender equality today and sustainable tomorrow. It is very meaningful or informative. Thank you, ma'am. Thank you very much for enlightening us. Now, I request Professor Vaishali Phale, Assistant Professor, Amalakchan Law College, to propose vote of thanks. Thank you so much, ma'am. Very first, I wish all the dignified ladies, smart and beautiful ladies, a very happy Women's Day. It is my immense pleasure to deliver vote of thanks on this beautiful occasion. This occasion is given to us by the IQAC coordinator of both the colleges. Very first, I would like to deliver my
hearty and sincere thanks to Dr. Atul अंजलि sir. मैम, Yes, ma'am. अंजलि मैम, मैडम के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो ज्वाइन Okay, नहीं हो ma'am. पा रही है। कोई जूम के मीटिंग का टाइम अप तो नहीं है हुआ है ना? नहीं मैम, अभी कंटिन्यू कर सकते हैं if you want. तो 2 मिनट वेट कीजिए, उनका फोन आया था मुझे, मैं उनको मैसेज करती हूँ, वो ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में। Okay. अभी मैं उनसे क्लियर कर लेती हूँ। Okay, 2 we मिनट will रुकिए। wait. Okay, no problem. Ma'am, should I wait for concluding? हाँ, Yeah, yes ma'am. ma'am, I yes think ma'am, we should wait for wait. 5 minutes. I'll Yeah, just convey we the can phone wait. message. Okay. हाँ, yes ma'am, अंजलि मैम, मैडम ज्वाइन Yes, हो ma'am. रही, 2 मिनट में ज्वाइन होती है। Ma'am, I think she is trying again and again, but she will. She is facing some network problem. Her data is going low, she said to me. She is trying to join with another mobile. We'll wait for 5 Okay. minutes. Okay, We'll wait for another 2 minutes. If she doesn't join, then that will be proved there is network problem. Then we can come for conclusion. We'll wait for 2 minutes more. ठीक है? Okay. No problem. Madam, am I audible now? हाँ, yes ma'am, Yes, yes ma'am. ma'am, you are audible. So I will share. Sorry for my internet problem. It's okay, ma'am. No, it's Is my screen visible now? Yes, ma'am. It is visible. I will move fast. Sorry for interruption. It's okay, ma'am. You can continue. So we were talking about this micronutrient deficiency, and if there are deficiencies in diet, then we by not consuming vegetables and fruits, these deficiencies are found. So the next one is about anemia. Anemia is very rampant in India. Actually, भारत देश सालों से कोशिश कर रहा है 12/12 इनिशिएटिव के माध्यम से कि हमारा जो भारत देश में जो बच्चियां हैं एट द एज ऑफ 12 उनका हीमोग्लोबिन 12 हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट रीचिंग टू दैट टारगेट. इसमें लाखों रुपए खर्चा हो रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह का हमें फायदा नहीं मिल रहा है. When hemoglobin is less than 11 grams, it is called as a less hemoglobin or anemic condition. Iron deficiency हमारे पर्सनल हाइजीन के बारे में मैंने बता ही दिया है कि बहुत साफ सुथरा हमें रहना पड़ेगा, नाखून काटने पड़ेंगे, क्लीन वाटर, क्लीन और हाइजीन हमारा अच्छा चाहिए तो हम एनीमिया बच सकते हैं. देन न्यूट्रिशनली इट इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल ऑल्सो. किसी का तो भी माइक शुरू है, वो थोड़ा सा बंद कर दे तो आवाज कम आएंगी. एक्सेसिव जो मेंसेस है उसके कारण भी हमें एनीमिया हो सकता है. मेंसेस के बारे में मुझे कुछ बातें जरूर आज शेयर करनी है कि जनरली इट इज अ मिथ दैट मेंस्ट्रुएशन जो ब्लड है इट इज वेरी डर्टी, बट द रियलिटी इज इट इज नॉट डर्टी एट ऑल. मेंस्ट्रुएशन के ब्लड में स्टेम सेल्स और स्टेम सेल से हम हमारे इट इज अ बेसिक सेल ऑफ अवर बॉडी.
और हम इससे कोई भी सेल तैयार कर सकते हैं, चाहे लीवर की हो, चाहे बोन की हो, टिश्यूज की हो, इससे सेल तैयार हो सकती है। तो इसका मतलब है ये जो ब्लड है मेंस्ट्रुएशन का, इट इज नॉट एट ऑल डर्टी, ये बल्कि हम सभी के लिए एक गर्व की बात है कि उसके शरीर से जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो ऐसा ब्लड निकालते हैं जिसके कारण फिर से दूसरी सेल्स बन सकती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मस्ट बी रेगुलर ऑटोमेटिकली, ये एक हमारा मिथ है। और रेगुलरिटी कैन गेट अल्टर्ड लाइक इन एनी अदर सिस्टम। कभी खराब होता है, कभी कभी नाक में सर्दी बहती है तो हमारी सिस्टम खराब हो जाती है। तो वैसे ही कभी कभी हमारी मेंस्ट्रुएशन की जो फीमेल की सिस्टम है वो भी खराब हो सकती है, उसको हम दुरुस्त भी कर सकते हैं, इतना सबने ध्यान में रखना है। इसके जो डिसऑर्डर है इसको इग्नोर करना चाहिए, ऐसा बहुत बार बोला जाता है। पर लेट मी बी वेरी, मुझे ना किसी को भी माइक से बहुत आवाज सुनाई आ रहे हैं, हॉर्न के वगैरह आवाज, तो जिसका भी माइक शुरू है प्लीज बंद कर दीजिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो डिसऑर्डर्स जो इग्नोर नहीं होने चाहिए वो इग्नोर करने के लिए, तो ये कभी भी इग्नोर नहीं होना चाहिए। मेंसेस एंड डाइट आर नॉट रिलेटेड, ऐसा लोग बोलते हैं, बट मेंसेस एंड डाइट आर इंटरलिंक्ड। क्योंकि अगर हम डाइट ज्यादा लेके ओबेज हो चुके हैं तो हमारी मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब होगी, अगर हम अंडरवेट है तब भी हमारा मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब होगा। मतलब अगर आपका डाइट गड़बड़ है डाइट में तो आपकी मेंसेस में भी गड़बड़ हो सकती है। और ये जो मेंसेस है, बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन को मैरिज तक इग्नोर करो, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऐसा गलत है। डोंट अलाउ टू ड्रैग दिस प्रॉब्लम टिल मैरिज, रेक्टिफाई इट इमीडिएटली, उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त कर लो। देन आयरन रिच फूड, जो मैंने अभी बोला, अगर हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा चाहिए, और हीमोग्लोबिन क्यों अच्छा चाहिए, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीम इज आयरन एंड ग्लोबिन इज प्रोटीन। तो हमारे शरीर में अगर आयरन अच्छा है और प्रोटीन अच्छा है तो हीमोग्लोबिन अच्छा ही हो जाएगा। तो आयरन रिच फूड्स कौन से है? सोयाबीन है, देन मटकी, काउपीज, लेंटिल्स, जितने भी सारे लेंटिल्स है, मतलब ये जो उसड़ी बोल रही हूं मैं जिनको, वो, देन पोहा, खजूर, गुड़, देन मस्टर्ड यानी सरसों का साग जब बनाते हैं तो वो मस्टर्ड लीव्स, तरबूज यानी कलिंगड़, देन किशमिश, हमारा गेहूं, रागी, मिंट, पुदीना के पत्ते, बाजरी, देन स्पिनच यानी कि पालक, अंडे, और foods should be cooked in iron pan. They are rich in iron. So many more foods are there, but some few I have listed over here. So everyone must consume all these foods. Calcium is the most important nutrient जो हमने खाना चाहिए। और सामने जो आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं इन सब में कैल्शियम है। अगर हम इसको रोज खाते हैं या फिर हफ्ते में इसमें से 2 या 3 डेली खाते हैं तो हफ्ते में हमारे ये सारे कंज्यूम हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चित्र, बाकी तो सब पहचान के हैं, लेकिन एक चित्र रखा है चूना और पान का भी। तो चूना जिसके यूज तंबाकू खाने में होता है वो मुझे नहीं कहना है, मुझे ये कहना है कि आपके डाइट में जो हम सब्जी धोते हैं तो उस समय सब्जी को जब पानी में डालते हो काटने के पहले तो उसमें थोड़ा सा चूना डाल दीजिए ताकि वो चूना उस सब्जी में थोड़ा सा एब्सॉर्ब हो जाता है। देन रिमूव इट फ्रॉम वाटर, देन कट योर वेजिटेबल एंड उसको छोक लगा के अपनी वेजिटेबल बना लो तो हमें कैल्शियम मिल सकता है। साथ ही साथ घर का बना हुआ पान अगर हम खाते हैं तो भी हमको कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलेगा। और बाद में हमको दांत भी अच्छे से घिसना है, नहीं तो दांत खराब हो सकते हैं। राजमा, सोयाबीन, फिर ये जो है ये सब हमने अगर खाया तो हमें कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम हमारे लिए की बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बोन्स का। जब तक हम कैल्शियम अच्छा नहीं खाते
बोन्स बनेंगे नहीं अच्छे। और अच्छे बोन्स बनने के लिए कैल्शियम खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। और कैल्शियम के दोस्त है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन डी। अगर ये उसके पास है तो ही कैल्शियम बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब होता है। विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है? अनफॉर्चुनेटली बहुत कम जगह से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी एंड कैल्शियम ये एक साथ जाते हैं। अगर हमारे शरीर में इनफ विटामिन डी नहीं है तो हमारे बोन्स के पास एब्सॉर्ब करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। कैल्शियम होने के बावजूद भी वो एब्सॉर्ब नहीं होगा। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम अच्छी मात्रा में नहीं है और अगर विटामिन डी है तो विटामिन डी का भी उसमें कोई उपयोग नहीं रहेगा। मतलब जब चाहिए तब ये दोनों चाहिए। ये दुक्कल है, ये दोनों की जोड़ी है, ये दोनों एक साथ चाहिए। और इसके सोर्सेस है सनलाइट, फिश, एग, देन एग का पीला वाला भाग, देन मिल्क, कर्ड, और जितने भी बाजार में फोर्टिफाइड फूड्स आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग फूड को फोर्टिफाई कर रहे हैं विथ विटामिन डी। तो ये जो फूड अगर हम खाते हैं तो हमें विटामिन डी मिलेगा। और साथ ही साथ सनलाइट, सनलाइट में हम अगर जाएंगे तो ही विटामिन डी हमारे शरीर में तैयार होने वाला है। तो टेक केयर, अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो आज मार्केट में विटामिन डी के सैशे अवेलेबल है। कंसर्न योर डॉक्टर, गेट योर टेस्ट डन एंड स्टार्ट कंज्यूमिंग विटामिन डी सैशे, जैसे डॉक्टर डोज प्रिस्क्राइब करेंगे वैसा। देन द नेक्स्ट वन इज वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। आपके शरीर में आपको अगर कैल्शियम अच्छे से एब्सॉर्ब कराना है तो रेगुलर वेट बेयरिंग एक्सरसाइज होने चाहिए। उसके सिवा आपके बोन मजबूत नहीं बनेंगे। मजबूत बोन बनाना है, अगर आप एडोलेसेंस में मजबूत बोन बनाओगे तो ही जब आप एडल्टहुड में और ओल्ड एज में जाओगे तब आपके बोन हेल्दी बनेंगे। देन नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहां से मिलता है? प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेस है हमारे लिए लीन मीट, देन फिश, अंडा, चीज, सोयाबीन, नट्स, लेग्यूम्स, कर्ड और मल्टीपल्स फ्लोर। हम लोग मल्टीपल्स फ्लोर घर में, जो लोग वेजिटेरियन है वो दे शुड कॉन्सन्ट्रेट ऑन लेग्यूम्स, जो उसळी मी ज्या सांगितल्या त्या, अँड नट्स, ड्राय फ्रुट्स अँड नट्स, दाणे, शेंगदाणे आणि ड्राय फ्रुट्स, नंतर सोयाबीन आणि मल्टीपल्स आटा, ये हम घर में बना सकते हैं। इसकी मैं क्विक आपको रेसिपी बता देती हूँ। 1 किलो गेहूं लेना है, उसमें बाजार में जितनी दालें अवेलेबल है you add 100 grams of each dal in this 1 kilo of गेहूं। गेहूं के 1 किलो में 100 ग्रॅम्स हर एक दाल और हर एक पल्स, यानी की जितक्या उसळी आहे आणि जितक्या डाळी आहे त्यांचे 100-100 ग्रॅम टाकायचे आहेत। फक्त जो हम सोयाबीन डालेंगे उसको अच्छे से सेक लेना है। सोयाबीन को कच्चा कभी भी खाना नहीं, सोयाबीन को अच्छा सा सेक लेना, उसको ठंडा होने देना, and then you pour this soybean in the mixture and then prepare a flour out of it। इसमें से आपको आपका आटा बनाना है। 1 किलो गेहूं और इसमें सारी दालें और सारी लेग्यूम्स 100 ग्राम, साथ ही साथ भूंजे हुए सोयाबीन 100 ग्राम आप डालिए और इसको पिसा के लाइए। दिस इज अ मल्टीपल्स फ्लोर। अब इसका महीन रोटी तो बनेगी नहीं, तो डोंट ट्राई टू मेक महीन रोटी। इसमें मस्त हल्दी, नमक, मसाले आपको जो पसंद है वो डालिए, इसमें कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल डालिए और इसका थेपला बनाइए एंड कंज्यूम इट विद बटर। और ये बहुत अच्छा टेस्टी भी है, स्वादिष्ट भी है, न्यूट्रिशियस भी है, दिखता भी अच्छा है और जीभ पे टेस्ट भी अच्छी देता है। सो स्टार्ट कंज्यूमिंग मल्टीपल्स फ्लोर के बने हुए थेपले every day as a breakfast or lunch or dinner, but preferably as a breakfast will be very fine for you। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको ले रही हूँ इम्यूनिटी के बारे में। देखो इम्यूनिटी क्या है? द एबिलिटी टू अवॉइड और not to be affected by a disease of infective origin। यानी बाहर कोरोना वायरस आया भी
तो हमें नहीं हुआ तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमने केयर अच्छी ली और हमारी इम्यूनिटी भी अगर अच्छी है तो हमें कोरोना वायरस का डर कम था या नहीं था। अब इम्यूनिटी के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार है। इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी इज यू आर बॉर्न विद दैट इम्यूनिटी, यानी आपको जेनेटिकली आपकी मदर के माध्यम से आपको ये मिलते जाती है, यू आर बॉर्न विद दिस इम्यूनिटी। द सेकंड इज एडाप्टिव इम्यूनिटी, एडाप्टिव मतलब मदर से बच्चे में आती है। जब मदर को प्रेगनेंसी में जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि गैमा ग्लोबुलिन का हो सकता है, डीपीटी का हो सकता है, इससे बच्चे में प्रोटेक्शन आ जाता है, इम्यूनिटी आ जाती है, दैट इज एडाप्टिव इम्यूनिटी। देन पैसिव इम्यूनिटी इज थ्रू इम्यूनाइजेशन, या पैसिव बोले तो सॉरी, मदर के कारण आपको मिलती है। देन द नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन की जो इम्यूनिटी है, आपको जन्म लेने के बाद जो इम्यूनाइजेशन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसके कारण आपको जो इम्यूनिटी आती है वो। और एडाप्टिव इम्यूनिटी इज आप जैसे जैसे बढ़ते हो, मतलब आप जैसा जैसा खाना खाते हो, जो भी फूड खाते हो, अगर वो न्यूट्रिशियस है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ते हुए दिखाई देगी। अब ये इम्यूनिटी के बूस्टर फूड्स क्या क्या है जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऑल गुड फूड्स आर इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स। इसमें पहला आ गया फ्रूट्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ढेर सारा न्यूट्रिशन होता है, जिससे कि WBC श्वेत पेशी, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स बहुत ज्यादा रिच होते हैं और जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। द सेकंड इज पल्सेस एंड लेग्यूम्स, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है और इसके कारण हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि ऑल एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो हमारे शरीर में अगर प्रोटीन अच्छा हो, चाहे वेज डाइट से हो चाहे नॉन वेज डाइट से हो, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने की लक्षण ज्यादा हमें दिखते हैं। गार्लिक में यानी कि लसूण, यामध्ये असतं एलिसिन, एक एलिसिन नाम का घटक रहता है। दिस एलिसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, इट इज अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड एंड एंटी माइक्रोबियल। तो हमने रोज अगर लहसुन खाया तो हमारे लिए इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमको कोई भी डिसीज, नॉट ओनली कोरोना, कोई भी वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाला जो इन्फेक्शन है उससे हमारा बचाव हो जाएगा। देन कर्ड, कर्ड हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, क्योंकि कर्ड से हमारे पेट का जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो दुरुस्त हो जाता है, वो सुदृढ़ हो जाता है। तो हमारा माइक्रोबियल फ्लोरा अच्छा हो गया तो अपने आप हमारा इम्यून सिस्टम अच्छी हो जाती है। देन स्प्राउट्स, स्प्राउट्स म्हणजे कोणत्याही उसळीला जेव्हा मोड येतात, अंकुरित धान जो होता है, इसमें इसका प्रोटीन ज्यादा डाइजेस्टिबल फॉर्म में हो जाता है और इसका विटामिन सी बढ़ जाता है, तो नेचुरली इसके कारण हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। देन जिंजर, जिंजर यानी कि अदरक, जिंजर में 2 चीजें हैं, एक है जिंगरॉल और दूसरा है जिंगरॉन, जिंगरॉल एंड जिंगरॉन। ये जो है ना इतना मैजिक करते हैं हमारे शरीर में, दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ वायरस इन अवर बॉडी। हमारे शरीर में वायरस को आने की जो एंट्री है वही उसको बंद कर देते हैं। अगर मान लो गलती से आ भी जाए वायरस, तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन होने नहीं देते हैं। कौन? अदरक। तो हमने अदरक का सेवन करना चाहिए। अलग अलग फॉर्मेट में हम अलग अलग रेसिपी में अदरक डाल सकते हैं, तो अदरक का यूज भरपूर मात्रा में हमने करना चाहिए। देन तुलसी, जो कि हमारे आंगन में होती है, हमारे हर एक के घर में होती है, इसमें जिसको हम बोलते हैं ना टी हेल्पर, यानी लिम्फोसाइट्स ज्यादा है तो अपनी इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। तो डेली तुलसी के पत्ते धो के चबा चबा के खाने चाहिए। अगर बच्चा छोटा है तो तुलसी के पत्ते धो के उसका रस निकाल के, कूट के उसको रस निकाल के, क्योंकि वो थोड़ा तीखा होता है, उसमें थोड़ा शहद डाल के बच्चे को पिलाने से एक तरह की घुटी जो कि बच्चे का प्रोटेक्शन करे, ऐसी हम तैयार कर सकते हैं। सेम इज विथ मिंट, पुदीना के भी पत्ते हमने खाने चाहिए।
देन हल्दी, ये भी एक जिसको हम बोलते हैं, उसमें कर्क्यूमिन नाम का एक घटक होता है हल्दी में, और इट इज एंटीवायरल, वायरस के खिलाफ ये काम करता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। ग्रीन टी उसी का प्रकार है, हमने वो भी लेना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। ढेर सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स क्लियर अप होने के लिए मदद होती है। नॉर्मल व्यक्ति ने डेली 4 लीटर, कम से कम 3 लीटर तो भी पानी पीना चाहिए। 3 लीटर यानी फ्रिज की 4 बोतल्स, बड़ी वाली जो बोतल हम फ्रिज में रखते हैं उसकी 4 बोतल्स पानी हर किसी ने डेली पीना चाहिए। देन कोकोनट ऑयल, इसमें भी बहुत एक इंपॉर्टेंट घटक है जिसका नाम है लॉरिक एसिड। इसका डाइजेशन होके मोनोलॉरिन तैयार हो जाता है, और ये लॉरिक एसिड और मोनोलॉरिन क्या करते हैं, बैक्टीरिया और वायरस को मार देते हैं। अब ये तेल का उपयोग सब्जी परोसने में, सब्जी में मत कीजिए, या तो इसको 1 चम्मच ऐसा ही पी लीजिए, या फिर इसको चटनी के ऊपर डाल के, जो हम थाली में चटनी लेते हैं उसके ऊपर डाल के, या सब्जी के ऊपर डाल के ले लीजिए। सब्जी पकाने के लिए इस तेल का उपयोग करें तो ये लॉरिक एसिड और इसका थोड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए वर्जिन कोकोनट ऑयल जो बाजार में अवेलेबल है, एडिबल ऑयल, इसको आप लीजिए और इसके माध्यम से यू कैन किल द वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अब हम जो जाएंगे स्ट्रेस के तरफ। देखो आजकल हर किसी को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस रिलीजिंग फूड्स होते हैं सनफ्लावर सीड्स, जिसमें कि सेलेनियम नाम का घटक है। ये सेलेनियम acts as an antioxidant and hence reduces stress. Then pumpkin seeds and banana, इसमें पोटेशियम ज्यादा है, it regulates your blood pressure, तो अपने आप स्ट्रेस कम हो जाता है। इसी में पंपकिन सीड्स यानी भोपळ्याच्या बिया आणि बनाना यामध्येच झिंकचं पण प्रमाण जास्त आहे, आणि म्हणून आपलं जे ब्रेन मधलं इमोशनचं सेंटर आहे त्याला हे झिंक कंट्रोल करतं, क्योंकि ये इसको कंट्रोल करने के कारण हमारा ब्रेन अपने आप शांत रहता है, तो स्ट्रेस कम हो जाता है। डार्क चॉकलेट, इसमें ट्रिप्टोफैन नाम का घटक बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण एक तरह का जो हैप्पी हार्मोन है, सीरोटोनिन नाम का एक हैप्पी हार्मोन होता है, हमारे शरीर में रिलीज होता है, और इसके कारण हमारी चिंता, एंजाइटी जिसको हम बोलते हैं, वो कम हो जाती है। इसी डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, सो इट रिड्यूसेस डिप्रेशन। एक बात ध्यान में रखना है, चॉकलेट खाने के बाद ब्रश अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे। देन वॉलनट यानी कि अखरोट, इसका तो शेप भी ब्रेन के जैसा ही है। अखरोट इज वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, देन विटामिन बी, विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक एंड आयरन, इतने सारे गुण इस अखरोट में है। एंड इट रिड्यूसेस स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल नाम का जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको रिड्यूस कर देता है, जो स्ट्रेस के कारण रिलीज हो चुका हार्मोन है उसको रिड्यूस कर देता है, और हमारा ब्लड प्रेशर भी लोअर डाउन करता है। तो जिनको भी बीपी की शिकायत है वो रोज 2 टुकड़े अखरोट यानी कि 1 अखरोट खाए, और जिनको ये लगता है कि हमें स्ट्रेस है, हमें आगे जाके बीमारी ना होए, तो वो भी रोज 2 टुकड़े अखरोट खाए। और सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स बहुत ज्यादा टेस्टी तो है नहीं, लेकिन खाना तो है, क्योंकि ये बहुत गुणी है। तो हमने क्या करना चाहिए, बाजार में सनफ्लावर सीड के साथ साथ मगज भी मिलती है, तो हमने सनफ्लावर सीड्स लेना है 10 और मगज भी लेना है 10 एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, और उसको खा जाना है कॉम्बिनेशन करके, तो इसकी टेस्ट इंप्रूव हो जाएगी और मगज भी से प्रोटीन भी मिल जाएगा। वैसे ही पंपकिन सीड्स भी कुछ टेस्टी है नहीं, लेकिन एवरीथिंग इज नेवर, वी आर नॉट सपोज टू कंज्यूम एवरी टाइम एवरीथिंग वेरी टेस्टी, पर पंपकिन सीड्स टेस्ट में बैड भी नहीं है। लेकिन इसके साथ हम खरबूजे की बीज ले सकते हैं, वो भी बाजार में मिलती है। 10 पंपकिन सीड्स,
10 खरबूजे की बीज, और इसको हम एट द टाइम ऑफ स्नैक्स, दोपहर के स्नैक्स के समय खा सकते हैं। तो ऐसा करके हमने सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स को डेली खाना बहुत 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 जरूरी है। नेक्स्ट इज कर्ड। कर्ड ने पहले ही मैंने बता दिया है कि इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टर है कर्ड, तो हमको इसको रोज खाना है, या तो छाछ के रूप में या फिर कर्ड के ही रूप में। घर पे बना हुआ कर्ड हमें डेली खाना है। कोकम, इट इंक्रीजेस, कोकम नाम का एक फ्रूट मिलता है, तो कोकम का सिरप भी मिलता है, लेकिन हम अगर वजन ज्यादा है तो ज्यादा शक्कर या डायबिटीज है तो सिरप में बहुत ज्यादा शुगर होती है, तो वो ना खाके हम कोकम फ्रूट भी ले सकते हैं। जस्ट इंसर्ट दैट कोकम इन अ ग्लास ऑफ वाटर, और उसका जो पानी है वो पी जाओ, वापस से पानी भरो, वो कोकम का फ्रूट भी खा लो और वो पानी भी पी लो। तो कोकम से हमारे स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं और हमको अपने आप जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है। टर्मरिक, ये जो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, दैट इज नॉट ऑफ बेसन लड्डू, दैट इज टर्मेरिक लड्डू, हल्दी के लड्डू। हल्दी के लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये फोटो में बड़े दिख रहे हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, अब बिल्कुल एकदम ही छोटे छोटे। टर्मरिक के लड्डू कैसे बनते हैं? हळद, घी, देन उसके साथ में नमक, और इसी के साथ में आपको गुड़ डालना है सेम मात्रा में, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक। अगर ब्लड प्रेशर के शिकार हो तो नमक कम करना, देन आधा चम्मच गुड़ और आधा चम्मच ही घी, इन सबको अच्छे से मिला लो और इसके लड्डू बनाओ, छोटे छोटे लड्डू बनाओ, इसको खाओ तो अपना थ्रोट और अपना सब कुछ अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ में कर्क्यूमिन के कारण, हल्दी में कर्क्यूमिन, जब हम दाल में या सब्जी में हल्दी डालते हैं तो कुछ कर्क्यूमिन का लॉस हो जाता है, लेकिन जब हम रॉ हल्दी खाते हैं तो ये कर्क्यूमिन हमको 100% अवेलेबल हो जाता है, और इसके कारण हमारी जो एंजाइटी यानी कि चिंता है वो थोड़ी लोअर डाउन हो जाती है और स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। सो स्टार्ट कंज्यूमिंग हल्दी के लड्डू एवरी मॉर्निंग, देन at the time of lunch, afternoon and in the evening, and again while at the time of sleeping, तो आपको स्ट्रेस कम हो जाएगा। ग्रीन टी का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एग्स कंटेन अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन कंटेन्स क्रिएट सीरोटोनिन जो कि हैप्पी हार्मोन है, सीरोटोनिन नाम का। और हैप्पी हार्मोन अगर एक बार हमारे शरीर से रिलीज हो जाए तो हमको अपने आप स्ट्रेस कम हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। कोई भी अच्छा न्यूट्रिशन अगर एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं तो ज्यादा फायदा नहीं देगा। एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। गुड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। देखो, इम्यूनिटी सिस्टम के अलग एक्सरसाइज है, वी ऑल नो दैट। बहुत लोग अभी फिजिकल एक्सरसाइज करते भी है, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ अलग एक्सरसाइज है। इम्यूनिटी सिस्टम का जो हम ये थोड़ा सा टाइम के कारण मैं ये स्लाइड स्किप कर देती हूँ, आपको सीधे सीधे एक्सरसाइज बता देती हूँ। देखो, हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि इस इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम करते हैं। लिम्फ नोड्स हमारे कान के पीछे है, हमारे गर्दन में है, हमारे बगल में है जिसको हम एक्सिला कहते हैं, हमारे पेट में है, ग्रॉइन यानी मांडी जवळ आहे, आणि आमच्या पोटरीमध्ये आहे, पायाची जी पोटरी आहे त्याच्यामध्ये आहे। या लिम्फ नोड्सला जर आपण, कारण आम्ही हृदयाला जेव्हा एक्सरसाइज, हृदयाच्या माध्यमातून ब्लड सर्क्युलेट होतं, त्याला पंप आहे, हृदय इटसेल्फ इज अ पंपिंग ऑर्गन, पण जे लिम्फ नोडचा जो एक्सरसाइज आहे त्याच्यासाठी पंप नाहीये, त्याला नाहीये पंप। तर आपल्याला हा एक्सरसाइज मुद्दामून करावा लागेल आणि म्हणून ते एक्सरसाइज करणं आवश्यक आहे। तर तो एक्सरसाइज मी दाखवतेय बघा। कानाच्या जवळच्या लिम्फ नोडला एक्सरसाइज देतोय बाय पुलिंग इयर अप अँड डाऊन, देन बाय मुव्हिंग इट क्लॉकवाइज अँड अँटी क्लॉकवाइज। आपले स्वतःचे कान क्लॉकवाइज अँटी क्लॉकवाइज फिरवा, देन नेक रिजनला एक्सरसाइज द्या, देन युअर ग्रॉइन रिजन अँड नेक रिजन जॉईंटली एक्सरसाइज देतोय आपण। देन कम्स युअर आपल्या बगलेला एक्सरसाइज द्या,
तो बगलेचा. त्यानंतर पोटातल्या लिम्फ नोडला एक्सरसाइज द्या, पोटाची एक्सरसाइज करून. देन कम्स बटरफ्लाय एक्सरसाइज, ग्रॉइन रिजन मध्ये एक्सरसाइज द्या, म्हणजे मांडीच्या जांघ्याजवळ एक्सरसाइज द्या, तर आपले लिम्फ नोड ऍक्टिव्हेट होतात. द नेक्स्ट इज लास्ट वन इज आपल्या पोटरीला, पायाच्या काफ रिजन, स्टँड अप, टोज हिल, हिल्स अप, टोज अप, हिल्स अप, असं करा. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन hold some chair or hold wall and do it for yourself. Additionally, keep in mind that stress and immunity are inversely proportional. Immunity अगर स्ट्रेस अगर बढ़ जाता है तो इम्यूनिटी कम होगी, इसलिए स्ट्रेस को बढ़ने से रोके. स्ट्रेस को जो मैंने फूड बताए वो खाके आप बढ़ने से रोक सकते हैं. और दूसरी बात, आप ये चीजें करके भी स्ट्रेस को कम कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसी ही आपकी आंख खुली, आपके सामने चाहिए येलो कलर. इट मे बी अ वॉच, इट मे बी योर वॉल, इट मे बी योर एनीथिंग, इट शुड बी येलो इन कलर. सो तो बोला जाता है कि अगर हमने आंख खुलते ही, क्योंकि पहले तो ऐसा था लोग जल्दी उठ के पीले कलर के सूरज का दर्शन करते थे, पर अभी जल्दी उठ के पीले कलर का सूरज दर्शन करना जरा असंभव हो चुका है. इसलिए मैं कह रही हूं कि येलो कलर आपके सामने रखिए तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा. देन लाफ्टर इज अ गुड थेरेपी फॉर रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस. घर में ऐसी सिचुएशन लाइए, आपके फ्रेंड्स में ऐसी सिचुएशन लाइए ताकि आप हरदम अच्छे से हंसी मजाक कर सके, या तो फिर लाफ्टर थेरेपी, जोर से हंसिए तो अपने आप स्ट्रेस कम हो जाता है. यू स्ट्रेच योर बॉडी एंड उस समय सोचिए आपने कौन सा अच्छा काम किया. हो सकता 1, 2, 10, 100, 1000 काम आपने अच्छे किए, तो उसकी याद कीजिए, तो अपने आप आपका स्ट्रेस कम हो जाता है. योगा और मेडिटेशन कीजिए. योगा और मेडिटेशन करने से लाइफ सेटिस्फैक्शन 21% बढ़ जाता है. इम्यूनिटी के सेल काउंट 33% बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन 56% कम हो जाते हैं. सो योगा एंड मेडिटेशन आर गुड एक्सरसाइज, और वो जरूर आप उसको आत्मसात कीजिए अपना समाधान बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए. दिस इज वन एग्जाम्पल. आपको क्या चाहिए? आपको विघातक मिसाइल चाहिए, डिस्ट्रक्टिव मिसाइल, जो कि आप फूड देख रहे हो, चित्र से आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है. इट इज ऑल जंक फूड. अगर आप इसका ये खाते हो तो आप शिकार हो जाओगे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज और माल न्यूट्रिशन के. इतने सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं. आपको क्या चाहिए? अनहेल्दी एंड इंफीरियर लाइफ चाहिए तो आप ये वाला फूड खाइए, और इसको डिस्ट्रक्टिव मिसाइल मैं बोलती हूँ. और इससे टेम्पररी प्लेजर ऑफ ईटिंग है, ये तुम्हारे जीभ को टेम्पररली अच्छा लगता है, तो ये आपका चॉइस है. तो आपको प्रॉब्लम्स भी होंगे. और अगर ये आपका चॉइस है, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव रॉकेट. सब्जी, फ्रूट्स, अच्छा डाइट इससे भरा हुआ होना चाहिए, और सीरियल्स यानी कि हमारे धान अनाज जो होते हैं उसके जो फूड बनते हैं वो, ये आपके दोस्त है. आप बहुत अच्छा सुदृढ़ और आरोग्यदायी और दीर्घायुष्य प्राप्त कर सकते हो. चॉइस इज योर्स. आपको क्या चाहिए? आपको जीवन हंसते हुए बिताना है या रोते हुए बिताना है? चॉइस इज योर्स. हंसना है तो अच्छा फूड ही खाना पड़ेगा. हमारा जो फूड है इट शुड बी, जो मैंने पहले आपको बैलेंस डाइट बताया वैसा ही लगेगा. हमने भगवान कृष्ण को हरदम उनकी इमेज बहुत हेल्दी पाई है. हमारे मन में या हमारे आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण बचपन से लेके तो एडल्टहुड तक काफी हेल्दी ही पाए गए हैं. तो मैं ये कहती हूँ, स्वप्न साकारण्या सुदृढ दीर्घायुष्याचे महत्व समजा बालपणापासूनच्या आहाराचे. भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या खाया
ये थोड़ा सोचिए तो पता चलेगा। उन्होंने तो हरदम हेल्दी डाइट ही खाया है। अगर हेल्दी डाइट और आनंदी स्वभाव है तो आप 100 साल जी सकते हो, more than 100 years also. So try to adopt good nutrition and gaiety यानी के आनंदी स्वभाव, ये आपको अडॉप्ट करना है। अब्दुल कलाम जी ने कहा था, उद्याच्या समृद्धीसाठी आजच्या तरुण पिढीची जोपासना करायला पाहिजे। बस इसी के लिए आज मैंने आपके सामने मेरे ये विचार प्रस्तुत किए। मैंने कितना भी कहा तब भी हर लेक्चर के बाद मैं एक प्रार्थना बोलती हूँ, वही प्रार्थना आज मैं यहाँ बोल रही हूँ। जे शक्य साध्य आहे निर्धार दे कराया, जे टाळणे अशक्य मज शक्ती दे सहाया, मज काय शक्य आहे अशक्य काय, माझे मला कळाया, दे बुद्धी देवराया, दे बुद्धी देवराया। धन्यवाद। किसी को कुछ अगर पूछना है तो जरूर पूछ। आई नो वी आर एक्चुअल में बहुत समय हो चुका है, पर लेकिन किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Anybody, if you want to ask any questions, you can ask. Everybody is tired now. Yeah. Okay, moving forward. Thank you, ma'am, for your sharing knowledge about nutrition and how to nourish our health. I believe we all have taken benefit immediately from the methods that you have suggested. So thank you again, ma'am, for your contribution and wonderful lecture. So now I request to Professor Vaishali Phale, ma'am, to propose a vote of thanks and conclude the program. Thank you so much, ma'am. I already wished hearty a very happy Women's Day to all the dignified ladies who join this program and who are on the virtual dials also. And also wish a very warm afternoon to all. And it is I'm very first heartily thankful to the organizing committee for giving me this chance to take the opportunity to deliver vote of thanks on this precious occasion. Thank you so much, organizing committee. Now, I deliver the formal vote of thanks for this today's workshop on women empowerment, which is organized on the occasion of International Women's Day. Very first, I would like to deliver my sincere thanks towards Dr. Atul Zaibhai sir, who has elaborately and explanatory given the detailed information about the what is cybercrime and what the precautions one has to take while using this net and today's modern media and information technology. Thank you so much, sir, for spending your valuable time for guiding us. Secondly, I would like to deliver my sincere thanks to Dr. Anjali Rajwade ma'am, Professor and HOD Home Science, RDG Women's College, Akola, for delivering an explanatory speech on nourishing health nutritionally. Thank you so much, ma'am. Ma'am has very well elaborated the concept of immunity and requirements of calcium and vitamins to our body, and what precautions we have to take while eating the foods and also in digesting the food. Thank you so much, ma'am. Ma'am has also very well explained the types of immunity also, which are really very essential to consider and to keep in mind always for us, and to concentrate on our diet also. Thank you so much, ma'am, for expending your valuable time for us. Thank you so much, ma'am. Then I would like to deliver my sincere thanks towards Dr. Ram Manohar Mishra sir,
Principal Amalakchand Mahavidyalaya, who has opened the today's workshop. Thank you so much, sir, for your valuable presence and attending the program. Thank you so much, sir. Then, not the least, but very valuable for us, that's our place of inspiration, source of inspiration, Dr. Suprabha Yadgirwar ma'am, Principal Amalakchand Vidhi Mahavidyalaya. Without her valuable support, this could not be happened. Thank you so much, ma'am, for your guiding speech, guiding presidential speech on the today's workshop. Thank you so much, ma'am. And I heartily deliver my vote of thanks to both the chairpersons of ICC committees, ICC committee of Amalakchand Mahavidyalaya and ICC committee of Amalakchand Vidhi Mahavidyalaya, that is Dr. Sunita Gupta ma'am and Dr. Anjali Divakar ma'am, for organizing such a beautiful workshop and giving us opportunity to listen such a wonderful speaker. Thank you so much, ma'am. Then I would like to deliver my sincere thanks to Professor Chaya Pote ma'am, who has nicely introduced today's guest speaker. Thank you, ma'am. Next, I would like to deliver my sincere thanks towards Dr. Sunita Gupta ma'am. She is also one of the organizing member, and she has also contributed in this program physically also by delivering the introduction of today's next guest speaker. Thank you so much, ma'am. On this occasion, I would like to deliver my sincere thanks to all my colleagues and senior faculty members also, Dr. Vijesh Muno sir, Dr. Sandeep Nagrare sir, and my colleagues, Professor Swapnil Sagne sir, Professor Vandana Pasari ma'am, Professor Usha Khavle ma'am, and all the members who have joined this program and who has made this program successful and contributed physically, directly, indirectly, virtually for the making this event successful. Thank you so much. And with the permission of the chair, I hereby declare that today's workshop and this virtual program is concluded here. Thank you so much. Ma'am, over to you. If any instruction or anything is there. No, there is no instruction. Okay. Okay. Thank you, all of you. Today's joining to today's session and make this program successful. Thank you so much. Okay. Who will close the link? Dr. Muno sir. Muno sir. Yes. Sir, we request you